डिस्कस करिया मॉक टेस्ट 16 क्वेश्चन नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल्स क्वार्टजाइट इज ए व्हिच टाइप ऑफ रॉक क्वार्टजाइट हो जोटे रॉक रो क्लासिफिकेशन जो देखिबा फिजिकल क्लासिफिकेशन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन आर्जिलेसियस रॉक सिलिसियस रॉक कैल्कारियस रॉक तो क्वार्टजाइट टा गोटे को कैटेगरी जीवो सिलिसियस रॉक SiO2 कंटेंट अधिका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 from the engineering point of view sandstone and limestone belong to which types of rock sandstone और limestone को type of rock तो रॉक रो क्लासिफिकेशन जदि हमें देखिबा गोटे होची हमर फर्स्ट होची इग्नियस रॉक जेतेबेले लाभा बा मैग्मा हमर बाहरी थाए गोटे होची अर्थ रो सरफेस बाहर आसी ठंडा हेई थाए आ गोटे होची अर्थ रो सरफेस भितरे ठंडा हेई थाए अगेन आ गोटे कैटेगरी अछि जदि किछि अल्प डेप्थ रे ठंडा हला ताकू कोन कहबा किछि गोटे अधिका डेप्थ रे ठंडा हेले ताकू हमें कोन कहबा आ गोटे हाइपोबासल रॉक भी अछि तो सेडा होची इग्नियस रॉक रो कैटेगरी इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव दैट इज योर इग्नियस रॉक जोटा होची हमर ग्रेनाइट बासल्ट बट सैंडस्टोन आउ लाइमस्टोन एमाने को कैटेगरी जिवे सेडिमेंटरी रॉक सैंडस्टोन आउ लाइमस्टोन होचंदी सेडिमेंटरी रॉक कैटेगरी जिवे सेठी यदि सबुठु बेस्ट सुटेबल ऑप्शन देखिबो इंट्रिंसिक रॉक तो हबन सैंडस्टोन लाइमस्टोन होचंती लाइमस्टोन को जेमिति हमर मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस करिबा जेमिति हाई प्रेशर आउ टेंपरेचर रे दैट विल बी कन्वर्टेड टू मार्बल तो सैंडस्टोन आउ लाइमस्टोन जेतिकी ऑप्शन अछि ता भितरु गोटे ऑप्शन दैट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक हला गोटे होची मेटामॉर्फिक रॉक आउ तो किछ ऑप्शन नै इग्नियस रॉक तो हबनी इंट्रूसिव हबनी खाली रॉक रो गोटे ऑप्शन अछि इंट्रूसिव रॉक एटा एक्चुअली सैंडस्टोन आउ लाइमस्टोन होचंदी सेडिमेंटरी रॉक आइदर सेडिमेंटरी रॉक ऑप्शन ले देइनी ये रॉक जो लिखा है सेटा सेडिमेंटरी रॉक होबा कथा ऑप्शन बी सर इंट्रूसिव रॉक टा कोन इंट्रूसिव होची जोटा कि अर्थ रो सरफेस भितरे ठंडा हला भितरे जोटा ठंडा हला सेटा होची इंट्रूसिव रॉक जोटा बाहर ठंडा हला ताको कहबा एक्सट्रूसिव रॉक 3 नंबर the indentation provided in the face of the brick रे ताको फ्रॉक कुली कहा जाय 10 into 4 into 1 number the defect in which white patches appear on the brick surface is known as what white surface जो हेते ताको कहा जाय एफ्लोरेसेंस एफ्लोरेसेंस रो तीनटा कैटेगरी अछि गोटे होची स्लाइट एफ्लोरेसेंस आउट होची मॉडरेट एफ्लोरेसेंस another one is your heavy efflorescence slight moderate heavy जो white patches हेता है due to presence of the alkali ताको कहा जाय efflorescence 5 the addition of fly ash होची गोटे waste material is an additive in the brick mix proportion result in what fly ash मिसेबा फल रे कोन रिजल्ट हेता है reduced drying shrinkage option B 6 which of the following is fused together to prepare the high alumina cement high alumina cement रे सबुठ अधिका कोन थाए बॉक्साइट थाए बॉक्साइट लाइमस्टोन जिप्सम बॉक्साइट लाइमस्टोन एंड जिप्सम मिसा जाए हाई एल्यूमिना सीमेंट रे ना सर बॉक्साइट और लाइमस्टोन सर
जिप्सम कोठु आसिला हाई एल्युमिनियम सीमेंट जिप्सम तो होउछ गोटे रिटार्डर भली काम करिवो ना इंटरनल एटा रिटार्डर ऑप्शन ए बॉक्साइट आउ लाइमस्टोन हाई एल्युमिनियम सीमेंट रे बॉक्साइट आउ लाइमस्टोन मिसा जाए आउ सेथरे इट इज द ओनली हाई हीट कैटेगरी सीमेंट व्हिच प्रोवाइड बोथ सल्फेट अटैक एज वेल एज फ्रोस्ट अटैक 7 According to IS 102621982, what should be the compressive strength of ordinary Portland cement of grade C? 32.5 ରୁ add କରିବ 5 ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବ 32.5 ରୁ 5 ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବ 37.5 37.5 ରୁ 42.5 42.5 ରୁ 47.5 तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ी बढ़ी चलिए ए बी सी डी ई सी रे लेख चलिए ताले ग्रेड सी विषय रे पचारची ए बी सी ताले 42.5 रू 47.5 ऑप्शन डी 8 Which of the following physical inspection test apparatus is used for determining the cement initial and final setting time? हाइकाट apparatus हाइकाट apparatus यूज करा जाए for both consistency test में भी यूज करा जाए और इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम भी यूज करा जाए हाइकाट apparatus लीच एटलस apparatus यूज करा जाए कहाँ पे साउंडनेस साउंडनेस जदि लाइन पाई साउंडनेस हैला फ्री लाइन पाई ताले लीच एटलस apparatus जदि एक्सेस मैग्नेशिया पाई हम चेक करछोनी देन ऑटोक्लेव टेस्ट आउट होची लीच एटलस फ्लास्क जोटा होची स्पेसिफिक ग्रेविटी पाई यूज करती ब्लेंस apparatus यूज करती कहाँ पे Kindness of फाइननेस पाई 9 The operation of removing humps and hollows of uniform concrete surface is known as what? Trowling ये सब होचे फिनिशिंग रो ऑपरेशन गुडा फास्ट हमें कौन करबा स्क्रीडिंग होची कौन जति के एक्सेस कंक्रीट अछि ताको हमें रिमूव कर देबा तापर होची फ्लोटिंग स्क्रीडिंग परे फ्लोटिंग होची कौन गोटे काठर पट्टा भली थिबो ता ऊपर गोटे हैंडल लागि थिबो ना जति के इरेगुलारिटी अछि सरफेस ऊपर ताको हमें बाहर कर देबा नेक्स्ट ऑपरेशन होची जोटा करोनी सहायता रे दैट इज अ ट्रैवल ताको हमें कहबा ट्रैवलिंग देन होची फिनिशिंग तो ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प्स तो को कैटेगरी जीवो screening of sir. स्क्रीडिंग कैटेगरी जीवो ऑप्शन बी 10 Shrinkage of concrete is directly proportional to what? का सहित directly proportional cement content shrinkage depend करिवो cement content ऊपर ता फ्लोटिंग पे कौन क्वेश्चन पड़ो कोटा फ्लोटिंग पे क्वेश्चन ता केमते आसे फ्लोटिंग पे एबे मैं कहले जोटा हम पट्टा लागि थिबो फ्लोटिंग होची कोन रिमूव ऑल द इरेगुलरिटीज जति सब इरेगुलरिटी अछि स्क्रीडिंग कर साला परे स्क्रीडिंग होची कोन जति कि एक्सेस कंक्रीट को हमें बाहर करबा एक्सेस कंक्रीट जेमिति कि हम्प्स हे गला होलो हे गला माने सपोज गोटे जगह रे अधिका अछि गोटे जगह रे खालो अछि अधिका को बाहर करिके खालो जगह रे पकेबा तो स्क्रीडिंग करि साला परे तापरे जति कि सब इरेगुलरिटी रहिला ताको प्लेन करिया कामडा दैट इज अ फ्लोटिंग नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट ता देखि थिबो गोटे पट्टाटे थिबो ता ऊपर गोटे हैंडल लागि थिबो मिस्त्री मान नै कि असंती एटा जेमते रिमूविंग हम्प्स एंड होलो आसला सेटा कोन क्वेश्चन आसे सेटा होची इरेगुलरिटीज Rough surface तो फिनिशिंग हला जति कि सब इरेगुलरिटी रहिला ताको सब इरेगुलरिटीज माने कोन जोटे टिके हल्का हल्का प्लेन हमकु करियर अछि गोटे होचे हम्प्स को काढिया सेटा हमकु पूरा जणा पडुची किंतु इरेगुलरिटीज ता हम्प्स काढी सल्ला परे आउ ताको जो प्लेन करिवे स्प्रेडिंग परे तापर फ्लोटिंग करिवे 11 compaction of concrete is done to compaction कौन पाई करिवा remove air bubble remove air remove bubbles air bubbles 12
The flaky aggregate is said to be elongated if its length is Thrice the mean That's the minimum. ଯଦି flaky aggregate ଅଛି should be less than 0.6 times the mean dimension in case of the flaky. elongated aggregate ହେଲେ କେତେ ରହିବ 1.8 times the dimension. ତ ଦି thrice ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ combine କରିବା ମାନେ flaky aggregate ମାନେ ଗୋଟେ aggregate ଟା flaky and elongated ତାହେଲେ ତା ଲେନ୍ଥ ଟା ନିହାତି କ'ଣ ହବା ଦରକାର ଟିକେ ଅଧିକା ହବା ଦରକାର। ତ ନର୍ମାଲି ଆମର କେତେ ଥାଏ 2 times ଥାଏ 1.8 ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହବା ଦରକାର। ତ 2 ରୁ ଅଧିକା ହେଲେ 3 times। Generally wooden mold are made from wooden mold କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି strong କାଠ ଥିବ strong କାଠ କୋଉଟା ସବୁଠୁ System. ସିସମ କାଠ ହଉଛି ସବୁଠୁ strong। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ valuable item ଗୁଡା ତାକୁ ଆମେ କରନ୍ତି ଟିକ ରେ lab instrument ହେଇଗଲା valuable item ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କରିବା ଟିକ ରେ जोड़ा स्ट्रॉन्ग अच्छी स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट वगैरह मलबेरी रे करा जाए स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट। 14 स्टेटमेंट 1 कहूचे कंपास सर्वे इज स्टिल यूज्ड बाय जियोलॉजिस्ट टू लोकेट द मैग्नेटिक ओर्स ठीक अछि। स्टेटमेंट 2 कहूचे लोकल अट्रैक्शन कॉजेस इरोजन कंपास सर्वे ड्यू टू टेरेस्ट्रियल फ्यूचर आइदर नेचुरल और मैन मेड। लोकल अट्रैक्शन आइदर जदि किसी नेचुरल सब्सटेंस अच्छी जमीती कि आमर गोटे पहाड़ अच्छी से आयरन अच्छी एफी अच्छी तो ता प्रेजेंस रे लोकल अट्रैक्शन हो पारिबो अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल हो गला जोटा कि आयरन सब्सटेंस किछि थिबो आर्टिफिशियल तो लोकल अट्रैक्शन मैन मेड पई हो पारिबो नेचुरल पई हो पारिबो। तो दीटा को स्टेटमेंट ठीक अछि स्टेटमेंट 1 भी ठीक अछि स्टेटमेंट 2 भी ठीक अछि। Both statement 1 and 2 are individually true. Option A है परियो, option B भी option A दीटा भितर गोटे आंसर आसीबो। तो कोडा हबो देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन अछि कि नहीं से कहउचे कंपास सर्वे इज स्टिल यूज्ड बाय जियोलॉजिस्ट टू लोकेट द मैग्नेटिक ओर्स मैग्नेट जदि गोटे मैग्नेटिक ओर्स माने कोन ओर्स माने खणी माने गोटे पहाड़ रे मैग्नेट अछि मैग्नेटिक ओर्स माने लुहा अछि ताको हमें केमिति जानुचंती जदि लोकल अट्रैक्शन आसिला ता माने एठी अछि ता माने स्टेटमेंट 1 ठीक अछि और स्टेटमेंट 2 होजी तारो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ए करेक्ट। 15 in the quadrantal bearing system a whole circle bearing देछि 293 डिग्री 30 मिनिट 293 डिग्री 30 मिनिट माने फोर्थ क्वाड्रेंट रहइबो तो ताको हमें केमिति लिखिबा नॉर्थ थीटा वेस्ट होल सर्कल बियरिंग माने सबले नॉर्थ रो क्लॉकवाइज अप टू द सर्वे लाइन आउ क्वाड्रेंटल बियरिंग बा रिड्यूस बियरिंग माने होचे आइदर नॉर्थ रो नले साउथ रो आइदर क्लॉकवाइज नले एंटी क्लॉकवाइज जोटा भी पाख हबो। तो 360 रो खाली माइनस कर दबो 293 30 को माइनस कर दबो नॉर्थ 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ 66 डिग्री 30 मिनट टुवर्ड्स वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। 16 ट्रू एक्सप्रेशन देछि सेंसिटिविटी होछ हमर सर्वे रो फोन S by S by N ND. into D X by ND 2 62 6 by नॉले Alpha is equal to L by R 206265 6 S होचे स्टाफ इंटरसेप्ट N होचे डिवीजन D होचे डिस्टेंस L होचे लेंथ जोटा कि 2 mm थाए तो को ऑप्शन मैच करछि S by ND 206265 सेकंड। 17 कंटूर्स दे देछि 10 मीटर 30 मीटर 50 मीटर 70 मीटर माने इंटरवल केते दे देला 20 मीटर इंटरवल डिस्टेंस 20 मीटर 20 मीटर इंटरवल हे गला कंसीडर द फॉलोइंग स्केल तुमको देछि 1:20,000 रो देछि स्केल एन अलाइनमेंट ऑफ ए रोड एट ए रूलिंग ग्रेडियंट देछि 4% इज टू बी फिक्स्ड फ्रॉम द पॉइंट O रूलिंग ग्रेडियंट तुमको दे देला हैला
डिफरेंस केते अछि 20 मीटर अछि तो केते चेंज होउची देखिबो 20 मीटर रे केते अछि 4% ताले डिस्टेंस केते हला काढी दबो 20 मीटर रे 4% रो चेंज होउची डिस्टेंस होउची केते 20 मीटर तो 20 मीटर रे चेंज होउची 4% व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द आर्क with O as the center to get the point of alignment of the next contour ताले कौन करिवो डिस्टेंस से पचारची स्केल देइची 1:20,000 तो स्केल दे देइची तो डिस्टेंस गुटे जो एलिवेशन जो चेंज होउची 20 मीटर रे 4 रेट ऑफ केते होउची 4% रो चेंज होउची रूलिंग गाइडेंस देइची 4% तो 20 रे 4% चेंज होउची हैला केते आछी देखो एटा 500 मीटर 500 मीटर तो 500 मीटर तापरे पचारची कोन यूनिट देइची सब सेंटीमीटर रे तो 500 मीटर को सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करो सेंटीमीटर 5,000 तो एतिकी सेंटीमीटर रे खाली स्केल को मल्टीप्लाई कर दबो 1/20,000 इनटू एतिकी पाई जबो आंसर 2.5 centimeter 2.5 सेंटीमीटर ऑप्शन सी 18 The line joining the center of the objective glass to the center of the cross wire center of the objective glass to the center of the cross wire एको हमें कौन कहते लाइन ऑफ line of collimation Polymer. कॉलिमेशन लाइन ऑफ कॉलिमेशन जेतबेले इंस्ट्रूमेंट टा परफेक्टली लेबल रहइबो आ जेतबेले इनक्लाइंड अपवर्ड किंबा इनक्लाइंड डाउनवर्ड ताको हमें कहबा लाइन ऑफ साइट Right. 19 ए टोटल स्टेशन कैन मेजर टोटल स्टेशन साहाय्य हमें सब किछि मेजर कर परिबो horizontal हॉरिजॉन्टल vertical डिस्टेंस distance वर्टिकल डिस्टेंस सब किछि हम मेजर कर परिबो C. हैला C हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल भी मेजर कर परिबा हॉरिजॉन्टल आ वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर परिबा कारण सेतरे कोन लागि थाए ईडीएमआई लागि थाए इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लागि थाए 20 The sensitiveness of bubble tube in a label would decrease sensitiveness कमिबो माने अल्फा अल्फा रे वैल्यू केतेबेले कमिबो जेतेबेले टेम्परेचर बढ़िबो टेम्परेचर बढ़िले अल्फा रे वैल्यू कमिबो सेंसिटिव कमिबो आउ कोन कोन अछि जोथे कमिबो लेंथ ऑफ द ट्यूब जदी कमिला देले कमिबो विस्कोसिटी जदी बढ़िला ताले सेंसिटिव कमिबो देखो को ऑप्शन मैच करछ तो Viscosity सेंसिटिव and ऑफ द temperature बबल one. viscosity and temperature बढ़िले कमिबो को ऑप्शन Diameter of the tube increase हेले sensitivity टा भी कमिबा. diameter of the tube is increased diameter of the tube जदी बढ़िला diameter बढ़ुची माने रेडियस बढ़ुची एटा होचे आर्क टा एको जदी हमें एक्सटेंड करिवा आर्क को जदी हमें एक्सटेंड करिवा ये कोन हबो गोटे सर्कल हबो तो डायमीटर जदी बढ़ुची ताले रेडियस भी बढ़ुची आ रेडियस बढ़ुची माने से कोन होची कर्व रु अधिका फ्लैट जेते कर्व आसीबो जेते माने सर्कल जेते शार्प आसीबो रेडियस सेते कम आसीबो आ रेडियस अधिका आसी माने एटा कोन होची फ्लैट होची तो गोटे केस से फ्लैट अछि फ्लैट हेले सेंसिटिव बढ़िबो ना बेसी कर्व हेले सेंसिटिव बढ़िबो कोन हो आंसर विस्कोसिटी तो ऑप्शन ले देइनी गोटे देइची रेडियस ऑफ द Flat. कर्वेचर ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द बबल ट्यूब इज इंक्रीज्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर बढ़िले सेंसिटिव कमिबो आउडे देइची डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज इंक्रीज्ड डायमीटर जदी बढ़ुची देन सेंसिटिव कमिबो डायमीटर बढ़ुची माने कोन फ्लैट होची सर S गोटे ट्यूब ऊपर alpha is equal to S by ND हेले सर मते लाउची B टा ए जो डी टा डायमीटर नुहे
D is not diameter. D होचे कौन? distance, distance D होचे distance. D होचे जोठी staff रखिच सेउठु distance. That is your D. D is not diameter. Alpha is equal to L upon R 206265. ए जो R एटा होचे radius. सर ए होता है ताले radius of the curvature of the internal surface of the tube is into radius बढ़ले ताले increase alpha कमिबो. ऑप्शन ए. 21. latitude ଦେଇଛି, departure ଦେଇଛି, line ଦେଇଛି, the length of length the of the line line ପଚାରିଛି. ତାହେଲେ କଣ କରିବ? ଆଗେ error ବାହାର କରିଦବ. summation of latitude ର square summation of departure ର difference square for ର whole root root over. over କେତେ ବାହାରୁଛି? latitude ये ମାନେ 100 ର हमें square plus 45.83 ର square ର root over. ପାଖାପାଖି आंसर कर दो. 100 ର square ଏଠି 45 ର square କେତେ ବାହାରୁଛି? 110 110 110. ऑप्शन बी. To change the reading on the circle while measuring an angle कौन करिवा? अपर क्लैम्प टाको लूज करिवा और लोअर क्लैम्प टाको टाइट करिवा. Right. अपर क्लैम्प को लूज करिवा, लोअर क्लैम्प को टाइट करिवा. 23. Two straight lines intersect at an angle 60 degree. The radius of the chord joining the straight lines is 600 meter. The length of the long chord and mid ordinates in meters. Long chord पचारछि माने chord length केते पचारछि. chord length ର फॉर्मूला कोन? 2 into r into sin delta by 2. delta होछि deflection angle. deflection angle केते देछि? 60 degree देछि. तो 2 into radius देछि 600 into sin 30 degree. sin 30 degree जे 1 by 2 2 2 कटि गला. chord length हे जो तमरो 600 मीटर. तो chord length 600 मीटर. बी सी भितरु गोटे ऑप्शन. तापर मिड ऑर्डिनेट पचारछि. मिड ऑर्डिनेट माने होछि कोन? r minus r cos delta by 2. 600 minus 600 into cos 30. तो 600 ରୁ माइनस कर दियो. 600 into cos 30 जगह √3 by 2 ହେଲା. अब फॉर्मूला जदी मने रहउनी जो कहतले आगे डायग्राम ड्रा कर देबो. जहार भी फॉर्मूला मने रहउनी डायग्राम ड्रा कर देबो, इजी होबो. ହେଲା. तो एटा होची रेडियस और टांजेंट. तो एंगल टा होची 90 डिग्री. अगेन ए एंगल टा होची 90 डिग्री और एटा होची कॉर्ड लेंथ t1 t2. t1 t2 होची कॉर्ड लेंथ, ये होची मिड ऑर्डिनेट. 24. स्केल ऊपर वर्टिकल फोटोग्राफ ऊपर एथरो क्वेश्चन आस्थिला लास्ट एग्जाम. A vertical photograph was taken at an altitude of 1500 meter above the mean sea level. Above the mean sea level माने ताल तमु कौन दे देला? कैपिटल H capital दे H देला. कैपिटल H रो वैल्यू होची 1500. If the focal length of the camera f रो वैल्यू दे देला 20 मीटर. देखो इजी फार्मूला, बाकी एठी खाली मार्क करिवो 20 मीटर की सेंटीमीटर. यूनिट को चेक करिवो. यूनिट बेले बेले अलगा दे थाए. f रो वैल्यू दे देला. स्मॉल h रो वैल्यू केते देछि? 500 मीटर. तो सिंपल खाली स्केल रो फार्मूला पुट कर दो. फोकल लेंथ बाय f कैपिटल F divided by माइनस स्मॉल h. minus small h जेहेतु सब यूनिट सेम अछि मीटर देछि, खाली हमें माइनस कर दो. 1500 माइनस 500 1 by 50. एथर आस्थिला 25. इन यूलर्स इक्वेशन को जदि हमें डेरिवेटिव करिया बर्नौलीज इक्वेशन पाइथां. तो यूलर्स इक्वेशन ले कौन थाए? नो फोर्स. फोर्स तो नेग्लेक्ट होता है. फोर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, टर्बुलेंस एंड वेलोसिटी v स्क्वायर बाय 2g ये सब नेग्लेक्टेड. ऑप्शन डी. यूलर्स इक्वेशन को डेरिवेटिव करिया पाइबा बर्नौलीज इक्वेशन.
26. A plate 0.025 mm distance from a fixed plate moves at a velocity दे देला 60 centimeter per second and requires a force of 0.2 kgf per meter square to maintain this speed. The dynamic viscosity of the fluid between the plates will be Newton's law पके दो. Shear stress is equal to mu into velocity gradient du upon dy. dy है तो 0.2 kgf पर मीटर स्क्वायर तमन तुम shear stress दे दीची समथिंग पर मीटर स्क्वायर माने कोन एटा स्ट्रेस रो यूनिट तो shear stress तुमको दे दीची दैट इज योर 0.2 आ एठी देखो यूनिट सब अछि सेंटीमीटर स्क्वायर रे किंतु एठी यूनिट अछि कोउथरे मीटर स्क्वायर रे तो एठी आगे सांग सांग कोन करबो यूनिट को कन्वर्जन कर देबो परे पुन असुविधा हो 0.2 into 10 to the power minus 4 kgf per centimeter square तापर खाली न्यूटन्स लॉ पुट कर दो 0.2 into 10 to the power minus 4 will be equal to dynamic viscosity into du upon dy. Change in velocity क्वेश्चन देइछि कते 60 सेंटीमीटर पर सेकंड तो एटू म्यू रो वैल्यू पाइ जिवो म्यू इज इक्वल टू 0.2 into 10 into to the 10 to power the power minus 4 into distance देइछि 0.025 mm ताकू सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करिवो गोटे सेंटीमीटर जे 10 mm 0.0025 divided by 60. This is your answer. (27) One poise is equal to what? Poise होउछ हमर CGS unit. One poise जे केते 0.1 0.1 pascal pascal second. second 28 In a supersonic flow a diffuser होउछ velocity को कमिया पई diffuser कोन पई यूज करा जाय in supersonic flow माने Mach number केते थिबो Mach number जदि equal to 1 हैला sonic flow less than 1 हैला subsonic flow 0.6 greater than 1 हेले greater than 1 हैले supersonic flow supersonic greater flow than 4 किबा 5 हैले hypersonic flow तो supersonic flow रे diffuser कोन पे यूज करा जाय velocity को कमेवा पई तो velocity को कमेवा पई हैले सेतरे कोन रहइबो तमरो decreasing area रहइबो ना increasing area रहइबो decreasing रहइबो ना decreasing area increasing area रे decreasing increasing decreasing नले increasing दीटा भीतर गोटे ही ऑप्शन भेलो देखो गोटे सुपरसोनिक फ्लो रे हम डिफ्यूजर कोन पे यूज करछंती वेलोसिटी को कमेवा पई ना तो जले वेलोसिटी को हमें कमेवा गोटे होची ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया आइदर ए ऑप्शन ढा हबो न होले इंक्रीजिंग एरिया गोटे बढ़ुची आ गोटे होची एरिया कमुची कोउथरा में वेलोसिटी को कमे पारिबो area body gradually decreasing area so that ki resistance मिलिबो एठी पिटी होबो रेजिस्टेंस मिलिबो तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया एक्चुअली गोटे कंप्रेसिबल फ्लो रे कोन थाए dA with respect to A is equal to Mach number the square minus 1 by V into dV तो जेहेतु हमको डिक्री वेलोसिटी को कमियार अछि तो dV लेस देन 0 त माने नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज योर सुपरसोनिक फ्लो तो एरिया को हमको कमे पे पड़िबो लेस देन 0 दैट इज योर डिक्रीजिंग एरिया 29 center of the buoyancy always coincide with the center of the volume of fluid displaced B very good option B 30 the increase in metacentric height जते अधिका रहइबो सेते भलो किंतु डिस्कम्फर्ट फील होबो तो decreasing increases the the stability decreases the comfort of passenger 1 and 4 option B 31 assertion कोन कहूची a loss of head at a sudden contraction in a pipe is smaller than that a sudden expansion hello
तो जदि लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन देखियो दैट इज योर v1 माइनस v2 रो स्क्वायर बाय 2g लॉस ड्यू टू सडन कंस्ट्रक्शन होची 0.5 into v v square by square by 2g 2g ताले कौन होबो आंसर loss of head at a sudden contraction in a pipe is smaller than sudden expansion ठीक अछि when the flow contracts it tends to become irrotational एटा किंतु भूल अछि से कोचे तमे कॉन्ट्रैक्ट करबा फ्लोटा इरोटेशनल हे जिवो सेमिति किछ नथाय ताले a is true but r is false 32 डिस्चार्ज क्यू देछि स्पेसिफिक स्पीड रो फार्मूला पके देबा कोटा होची टरबाइन पई आउट होची पंप पई स्पेसिफिक स्पीड रो फार्मूला होची कोन n into q रो रूट ओवर बाय h to the power 3/4 4 स्पेसिफिक स्पीड से कोचे डिस्चार्ज हे गला अधा ताले q जगह रे q by 2 हे जिवो q जोठी अछि सेठी हे जिवो q by 2 रो रूट ओवर डिवाइड बाय h to the power 3/4 ताले खाली q by 2 रो जो रूट ओवर हे गला तो खाली रूट 2 टर्म्स उडे एक्स्ट्रा आसीबो एठी जहा थिला सेया रहइबो खाली उडे रूट 2 टर्म्स एक्स्ट्रा आसीबो तो ns by रूट 2 हे जिवो आंसर हे जिवो जहा भी स्पेसिफिक स्पीड आगु थिला सेतरे खाली रूट 2 गोटे एक्स्ट्रा हरि जिवो ns by रूट 2 ताले ऑप्शन नाही माने नॉन ऑफ देबो ऑप्शन डी ns by रूट 2 होबो 33 method of irrigation in which water is applied in the form of sprinkler spray irrigation sprinkler sprinkler 34 select the correct statement from the followings एमान भितरु कोटा ठीक बोली पचाउची कोटा ठीक the portion of first option देइजी the portion of pellicular water which remains unutilized is called hygroscopic water ठीक अछि हाइड्रोस्कोपिक वाटर माने जोटा सराउंडिंग हेकी थाए कैपिलरी वाटर टाइम यूज हेई थाए सर द मॉइस्चर कंटेंट पेल्कुलर वाटर टा सर कोन on util कोटा एटा पेल्कुलर वाटर टा एटा होची एक्चुअली वर्ड होची पेलिकुलर पेलिकुलर वाटर माने जोटा कि यूटिलाइज हेई नथिबो सॉइल रो सराउंडिंग रे थिबो और सॉइल रो सरफेस plant द्वारा तार utilization हे नथिबा सराउंडिंग रे थिबो तापर बी कहूची तो मॉइस्चर कंटेंट एट व्हिच परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस इज कॉल्ड विल्टिंग पॉइंट ए भी ठीक अछि बी भी ठीक अछि माने ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दीटा को ठीक हला माने ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर above करेक्ट 35 the term conjunctive use cu conjunctive use माने कोन conjunctive use of the water का कुआ जाय loss of the water as depth due to transpiration out होची loss of the water due to evaporation a और b 36 the uplift pressure on a upstream floor of hydraulic structure determined by Blake's theory as compared to Kosla's theory is कौन हो less uplift pressure जदि हमें कंपेयर करिबा ब्लिक्स आउ कोस्ला ताले ब्लिक्स रो कम आसीबो कंपैरिजन टू कोस्ला 37 the maximum scour depth d maximum for the condition of flow at noses of piers केते maximum flow different case पाई normally थाए maximum is equal to k into d d होची कोन normal scouring depth k होची गोटे constant जोटा कि डिपेंड करे types of the river flow ऊपरे maximum scour depth for condition of flow at noses of piers देछि तो in case of the noses of the piers तो सेठी केते थाए 2 थाए 2 times option b 38 type of cross drainage work in which the bed level of drainage is much above माने नदी अछि केनाल ऊपरे ताको हम कोन कहबा
Aqueduct. सुपर पैसेज तो केनाल अछि siphon नदी aqueduct ऊपर कौन ताले? एक्विडक्ट केनाल अछि नदी ऊपर दैट इज योर एक्विडक्ट आ साइफोन आଜ୍ଞा एक्विडक्ट होउची जदि नदी रे एटा हो सपोज सिंपल रिवर एटा होउची केनाल एटा होउची एक्विडक्ट साइफोन एक्विडक्ट माने होउची साइफोनिक एक्शन रे पानी जाउथबो माने हमें कोन करिवा नदी टाको टिके खोली दबा नदीर बैंक पर्सन को जो बॉटम पर्सन को खोली दबा पानी बर्तन कौन जीवो साइफोनिक एक्शन रे जीवो सेही सेम एक्विडक्ट रहिला किंतु एक्शन हे गला साइफोन सेति पय ना हे गला साइफोन एक्विडक्ट माने होउची केनाल रहिबो नदी ऊपर जदि साइफोनिक एक्शन ले पानी गला ताको हम कहबा साइफोन एक्विडक्ट जदि नदी रहिला केनाल ऊपर दैट इज अ सुपर पैसेज दीटा को सेम लेवल रहले ताको हम कहबा लेवल क्रॉसिंग 39 the temperature at which the air mass just becomes saturated if cooled at a constant pressure with moisture neither added nor removed is called the dew point. dew point ताको हम कहबा dew point जदि कूल होउची गोटे कांस्टेंट प्रेशर रे कूल होउची ताको हम कहबा dew point 40 rainfall simulators are used to determine what rainfall simulators हमें कौन पे यूज करती इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी पे हमें यूज करती रेनफॉल सिमुलेटर 41 the direct runoff hydrograph of a storm obtained from a catchment is triangular अछि माने half into base into height is triangular in the shape with base दे देछि 400 hours and the peak flow top flow ए वैल्यू दे देछि 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड आउ एरिया तुमको दे देछि आगे फास्ट कौन काट दबो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कर देले पाई जिवो एरिया अंडर द कर्व आउ डिवाइडेड बाय कैचमेंट एरिया कर देले पाई जिवो तुम रेनफॉल केते ताले रेनफॉल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस देछि केते 400 इनटू 50 50 हैला एठी डिवाइड देछि बाय आवर अछि एठी यूनिट देखियो एठी अछि आवर अछि एठी अछि सेकेंड तो कौन करिवो 60 इनटू 60 डिवाइड बाय केते अछि कैचमेंट एरिया 300 किलोमीटर स्क्वायर तो ऊपर अछि मीटर रे तळे अछि किलोमीटर रे तो कन्वर्ट कर देबो 300 इनटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर दिस इज योर आंसर इफेक्टिव रेनफॉल 42 a tropical anticyclone in the northern hemisphere is a zone of what tropical anticyclone high pressure with clockwise 43 the Delhi per capita consumption of water apparently increases with per capita consumption टा कॉमन सेंस क्वेश्चन टा per capita consumption केमिति पड़े जदि मो स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग जदि मते अधिका रहिला मो अधिका पानी रिक्वायरमेंट करिवि तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग अवेलेबिलिटी ऑफ द सीवरेज इन द सिटी दुई भी हबो मीटर टा हेले कमी जिवो मीटर हेले थार एटा हबो होलसम एंड पोर्टेबल क्वालिटी माने भलो भलो पानी मिलुची तो फर्स्ट आई सेकंड आई 4 1 2 4 डी the 3 अछि D 1 2 4 ऑप्शन डी 44 bacteria which use carbon dioxide as a source of carbon are known as what कार्बन डाइऑक्साइड को जे यूज करन ताको में कोन कहबो सोर्स ऑफ कार्बन जो बैक्टीरिया जे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए सोर्स ऑफ द कार्बन यूज करछु ताको में कहबो हेटेरोट्रॉफिक क्वेश्चन कोन डाले सी होची हेटेरोट्रॉफिक
सी होची हेटेरोट्रॉपिक जे अन्य मान जे निजे करि परिबोनी आउ काहा पर डिपेंड करिवो माने CO2 को से ब्रेक करि पारने आउ काहा पर डिपेंड करछि ऑटोट्रॉपिक माने जेमिति जे निजे करि पाउछि ब्रेक डाउन करि पाउछि CO2 रु से निजे कार्बन को नै पारुछि आज्ञा 45 मैच द फॉलोइंग अल्कालिनिटी का से रिलेटेड होबो अल्कालिनिटी का से रिलेटेड होबो आगे फास्ट जोड़ा जणा अछि सेटा देखि दो एथिरे मैच द फॉलोइंग रे जोड़ा जणा अछि ताको आगे देखि दो देखियो ऑप्शन मैच कर जिवो आगे फर्स्ट होछि EDTA का से हार्डनेस रिलेटेड हार्डनेस 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 बीटा EDTA हे वाला गोटे हार्डनेस देछि SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का से रिलेटेड स्टूडेंट H2SO4 अल्कालिनिटी तो A होची 3 B होची 4 A3 बी गोटे ही ऑप्शन अछि A3 तो ऑप्शन B हे वाला आगे देखिए ओपन C हे वाला 1 D हे वाला 2 46 टू सैंपल्स ऑफ वाटर गोटे होची A आउट होची B जनकर pH वैल्यू होची 4.4 आउ जनकर pH वैल्यू होची 6.4 हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक माने कोन करबो H+ कंसंट्रेशन बाहर करबो तो H+ कंसंट्रेशन सैंपल A रे केते हे जिवो 10 टू द पावर -4.4 कारण pH माने होची पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज योर माइनस लॉग H+ आयन लो कंसंट्रेशन तो pH जगह रे पुट करिवो केते 4.4 इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन लो कंसंट्रेशन तो लॉग को लॉगारिथम को जदि हमें हटेबा 10 टू द पावर करिया पड़िबो देन H+ आयन लो कंसंट्रेशन केते भाला 10 टू द पावर -4.4 फॉर A सैंपल पाई A सैंपल पाई 10 टू द पावर -4.4 B सैंपल पाई 10 टू द पावर -6.4 तो केते टाइम्स पचारछि त माने 10 टू द पावर -4.4 divided by 10 to the power -6.4 तो 10 to the power A by 10 to the power B केते हे जो 10 to the power A minus B 10 to the power 2 हे जो एटा 100 जे 100 बोलते गुणा 100 टाइम्स ऑप्शन सी 47 the desirable limit of chloride content as per BIS standards in water for domestic supply should not exceed what chloride content देइछे should not exceed desirable 50 माने 250 मिलीग्राम पर लीटर 48 which of the following is not an advantage of chloramines ammonia treatment of water chloramines ammonia treatment NaCl2 एटा होची कंटामिनेशन पई रखा जाय तो क्लोरामाइन्स अमोनिया ट्रीटमेंट रो ସେଇଟା ସାର୍ କେତେ ହେଲା RPM ସାର୍ କେତେ RPM ସୁବିଲାନି ଟିକେ RPM 250 ଆଜ୍ଞା 250 ppm parts per million बा मिलीग्राम पर लीटर ସାର୍ ସାର୍ 48 होची से कहूची नॉट एन एडवांटेज जदि हम एडवांटेज देखिया क्लोरामाइन्स रो काम होची कोन गोटे तो होची फ्यूचर कंटामिनेशन पई से हमर क्लोरीन को स्टोर को रखिथिबो किछि माने टेस्ट खराब करिवोनी कि ऑर्डर भी माने किछि बैड ऑर्डर प्रोड्यूस करिवोनी कोनोसी फ्यूचर रे जदि किछि कंटामिनेशन होला ता पई से सेफ्टी प्रोवाइड करिवो तो से कहूची कोटा एडवांटेज नुहे लेस इफेक्टिव देन क्लोरीन एलोन एटा ही होची not an advantage it prevents advantage there is no danger of overdose eta भी होची ठीक अछि quantity of chlorine required is reduced especially if organic matter is present in large amounts तो D भी ठीक अछि ऑप्शन ए हो आंसर 49 the short circulating occurring in a sedimentation tank is represented by कहा ठीक है साहाଯ୍य में रिप्रेजेंट रीसर्कुलेशन करते रेशियो रीसर्कुलेशन रेशियो कहा साहाଯ୍य में डिस्क्राइब करते शॉर्ट सर्कुलेटिंग occurring in a sedimentation tank रीसर्कुलेशन रेशियो माने होची जते रिटर्न करची कहा साहाଯ୍य में देखंती सर्कुलेटिंग समस्त आंसर गोटे
recirculation ratio option C शॉर्ट सर्किटिंग आम सेमती देखते शॉर्ट सर्किटिंग आम केमी देखती केते फ्लो हैला बाय तार डिटेंशन टाइम केते दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी हेल्प रे देखते तो शॉर्ट सर्किटिंग जो भी कंडीशन होता है जो ऊपर लेयर रे होता है जो फ्लो करुच्ची तो सी केते डिटेंशन टाइम तार कमी गला केते तार कमी गला विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम लेयर से अनुसार आम देखती सेडिमेंटेशन टैंक रो जो शॉर्ट सर्कुलेटिंग होची विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी कौन फ्लो थ्रो पीरियड बाय थियोरेटिकल डिटेंशन टाइम इनटू 100% देखते डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी जियोलाइट प्रोसेस कौन पे यूज करा जाए रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑप्शन ए टेम्पररी तो बॉइलिंग द बाहर 51 हाउ मच ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जेतिक आम ब्लीचिंग पाउडर पकेबा ताठू टिके कम आम पाइबा क्लोरीन हाउ मच ब्लीचिंग पाउडर हैविंग 20% अवेलेबल क्लोरीन माने जदि आम 100 ग्राम रो ब्लीचिंग पाउडर नौचन सेतिरे 20 ग्राम रो आम कोन पाइबा क्लोरीन पाइबा to is needed to disinfect 10,000 liters of water whose chlorine demand होची 1 मिलीग्राम पर लिटर क्लोरीन रो डिमांड होची 1 मिलीग्राम पर लिटर जदि हमको 1 मिलीग्राम पर लिटर रो क्लोरीन दरकार ताले 100 ग्राम में हम पाइबा केते 20% पाइबा 20% पाइबा हमरो क्लोरीन तो क्लोरीन डिमांड इज इक्वल टू कोन थाए क्लोरीन डिमांड होची केते अप्लाई करिसंती प्लस रेसिड्यू क्लोरीन दैट इज योर क्लोरीन डिमांड तो ब्लीचिंग पाउडर आम केते पकेबा केमिति जानिबा ब्लीचिंग पाउडर रो डोज केते पकेबा सर प्लस ने माइनस माइनस ना क्लोरीन प्लस डिमांड सर माइनस नहीं फास्ट आम क्लोरीन डिमांड केते रेसिड्यू होची माइनस केते बळी गला जेतिक आम अप्लाई करथिले आगे फर्स्ट एमी देखो इट शुड बी एंश्योर्ड दैट आफ्टर अबाउट आवर कांटेक्ट टाइम 0.2 मिलीग्राम पर लिटर क्लोरीन इज अवेलेबल 0.2 मिलीग्राम पर लिटर होची कोन अवेलेबल ताले अप्लाइड क्लोरीन केते अप्लाइड क्लोरीन होची केते 0.2 प्लस केते करिवा अप्लाइड क्लोरीन 20 ब्लीचिंग पाउडर आमे केते पकेवा सो दैट कि हमको एतिके रिक्वायरमेंट फुलफिल होबो एटा होची क्वेश्चन कोन करिवा को आगे फास्ट अप्लाइड क्लोरीन कर दबो दैट इज योर 1 मिलीग्राम पर लिटर होची कोन तमरो डिमांड ता सहित 0.2 मिलीग्राम पर लिटर होची क्लोरीन होची अवेलेबल अछि तो 1 प्लस 0.2 केते हो गला 1.2 मिलीग्राम पर लिटर 1.2 मिलीग्राम पर लिटर आउ केते अछि तमरो 10000 लिटर अछि तो 10000 लिटर पई टोटल क्लोरीन केते दरकार पड़िबो 1.2 मिलीग्राम जदि दरकार पड़ुची गोटे लिटर को ताले 10000 लिटर पाई केते दरकार पड़िबो इनटू कर दवा कि नहीं 10000 केते हे जिवो 12000 मिलीग्राम 12000 मिलीग्राम होची टोटल हमको एतिकी हमको क्लोरीन दरकार 12000 मिलीग्राम रो हमको क्लोरीन दरकार बता को ग्राम रे जदी कर देबो 12 ग्राम माने 12 ग्राम रो हमको क्लोरीन दरकार हैला जदि मु 100 ग्राम रो ब्लीचिंग पाउडर मिसौची पकोची केते क्लोरीन पाइबी 20 ग्राम रो क्लोरीन पाइबी कि नहीं कारण लेखा है 20% होची अवेलेबल क्लोरीन हैला ताले 12 ग्राम रो क्लोरीन पाया पई हेले मु केते पकेबी सेटा होची क्वेश्चन केते पकेबी 60 ग्राम 100 ग्राम पकेले मु पाइबी 20 ग्राम 1 ग्राम पकेले एमती कर 20 ग्राम 100 ग्राम पकेले गोटे ग्राम केते 100 बाई 20 जे 5 ताले 12 ग्राम केते 12 इंटू 5 दैट इज 60 तो ऑप्शन नहीं 60 ग्राम रो ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली हमको दरकार
तो 69 माने सुटेबल आंसर मारिबो 68 60 ग्राम रो एक्चुअली हमको दरकार फॉर दिस रिक्वायरमेंट ब्लीचिंग पाउडर 60 ग्राम हेले हमर हिजो 60 रो कम हेले होबनी 60 रो अधिक हेले चलियो पछे 60 रो कम हेले रिक्वायरमेंट फुलफिल होबनी 52 एंटी सिम्फोनेज पाइप इज यूज्ड टू व्हाट कौन करे पे सील वाटर सील E 53 solid waste treatment by pyrolysis refers to what pyrolysis कौन करे heat करिबा in the absence of the air heating in the presence नहीं heating in the absence of the air that is a pyrolysis 54 a summit curve is formed at an intersection of 3% of gradient and 5% माने n1 देइची plus 3% n2 देइची minus 5% तो एटा में कैपिटल n काढी परिबा कि नहीं n1 minus n2 रो मोड 8 8%. So n बाहरी वाला to provide a stopping side distance of 128 meter. Length of the summit curve is needed. Length of the summit curve केते पचारछि ns square by 4.4. Length of the summit curve रो फॉर्मूला कोन ns square by 4.4. n बाहरला केते 8 है s क्वेश्चन रे देइछि 128 रो स्क्वायर डिवाइड बाय 4.4 8% माने 8 by 100 केते आछी लेंथ ऑफ द समिट कर्व 8% माने 8 by 100 into 128 स्क्वायर into 4.4 128 स्क्वायर by 55 केते आछी 128 into 128 55 काटले 55 हेले 2 128 into 2 298 बाखा बाकी हो 55 if side distance s is equal to the length 2l of the vertical curve joining the two grade गोटे होची g1 आउट होची g2 the height of the apex रो खाली फॉर्मूला पचारछि height of the apex फॉर्मूला कोन g1 minus g2 into l by केते हिजोटा s दे दी हमको 2l दे दीछि तो s जगह खाली कोन पकेबो 2 into l मल्टीप्लाई करिवो length of the transition curve रो फॉर्मूला g1 minus g2 into s square by पुट करिवो जा भी तुमको देइछि डाटा s is equal to 2s s हो हमर साइड डिस्टेंस तो साइड डिस्टेंस जगह रे 2 into l पुट करिवो कोडा जो a b c d भितरु गोटे होचे 200 गोटे होचे 400 गोटे होचे 800 आउट होचे 2s तो हबन कारण s टा रहिबो नाही कारण s जगह रे केते पुट करिवो 2 into l पुट करिवो केते आछि एक्चुअली हमर लेंथ ऑफ द समिट कर्व फॉर्मूला कोन n into s स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into h1 plus h2 रो स्क्वायर हैला जदि लेंथ ऑफ द समिट कर्व दे s जदि साइड डिस्टेंस जदि ग्रेटर देन l हैला एठी हमर कोन अछि देखो साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू द लेंथ दैट इज योर 2 into l तमाने एठी कोन अछि s इज ग्रेटर देन l आ s जदि ग्रेटर देन l थिबो सेठी l हिजो केते 2s minus 2 whole into h1 plus h2 रो होल स्क्वायर डिवाइड बाय n ये होछ हमर फार्मूला हला तो हाइट ऑफ द एपेक्स रो फार्मूला होची दैट इज योर h होच हाइट ऑफ द एपेक्स n into l by 8 तो सब्स्टिट्यूट कर दियो s जगह रे l जदि पुट करिवो h is equal to n into s by 8 हला तो n into s डिवाइड बाय 8 हेउची तो ns by 8 जो आसुची s जगह रे जदि हम 12 को पुट करूचंती कारण
क्वेश्चन देइछि साइड डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ दैट इज योर 2l ऑफ द वर्टिकल कर्व जॉइनिंग द टू ग्रेड गोटे होछि g1 आउट होछि g2 ताले फॉर्मूला रे यदि पुट करिवो आसीबो तमरो g1 माइनस g2 into l divided by 800 ऑप्शन सी एटा होछि अपेक्स और डायरेक्ट फॉर्मूला h is equal to ns by 8 56 the angle of banking for a highway curve 200-meter radius दे दीची designed for cars traveling at a speed of 120 km per hour taking the coefficient of the friction between the tires in the road होची 0.4 angle of the banking केते पचारची e plus f equal to v square by 127 r पुट करो e plus f is equal to v square by 127 r तो f जगह 0.4 पुट करिवो e plus 0.4 120 रो स्क्वायर डिवाइड बाय 127 into r होची कते 200 तो एठू e बाहर करो 120 रो स्क्वायर डिवाइड बाय 127 into 200 minus 0.4 ए जो e रो वैल्यू जहां भी बाहरिला e होची कोन हमर tan थीटा तो सेटू पाइ जबो थीटा रो वैल्यू केते थीटा हे जो केते tan इनवर्स जहां वैल्यू आसीबो तो ये साइन होबोनी tan इनवर्स आइदर b होबो नले d होबो जानि पालो e plus f is equal to v square by 127 r सब डाटा दे देछि एठू e रो वैल्यू बाहर करिवो आ e is equal to कोन सुपर एलिवेशन दैट इज योर tan थीटा so theta is equal to tan inverse of e 57 what is the extra widening required on a extra widening रो फॉर्मूला होची कोन mechanical widening plus psychological widening mechanical widening होची n l square by 2r psychological widening होची v by 9.5 into r root over बस सब डाटा दे दीजिए खाली फॉर्मूला पुट करिए 58 ट्रैफिक साइन इंडिकेटिंग स्पीड लिमिट को साइन रेगुलेटरी साइन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 सहित मैच करियो पेनिट्रेशन टेस्ट कहा पई करा जाय पेनिट्रेशन टेस्ट कहा पई करा जाय ग्रेडेशन त माने ए होची 3 तो देखि दो को ऑप्शन ए 3 सी आउ डी दीटा भीतर गोटे ही करियो तापर बी को चेक कर दियो बी होचे मार्शल टेस्ट कहा पई करा जाय डिजाइन ऑफ द बिटुमिनस जो ऑप्टिमम कंटेंट ऑफ द बिटुमिनस बाहर करिया पे बी हे जो 4 तो बी 4 माने ऑप्शन डी होचे 60 select the correct statement हमन भितर कोडा करेक्ट स्टेटमेंट बोली कहबे contraction joints are spaced closer than expansion joints longitudinal joints are provided in cement concrete roads to prevent the longitudinal cracking dowel bars are provided in longitudinal joints option c ठीक अछि 61 which of the following statement is wrong सेठी थिला ठीक एठी कोछि कोडा wrong बोली को coning of wheel is necessary to prevent rubbing of flange of wheels with rails coning of wheel टा कोड दिया जोटी कर्व पोर्शन आसीबो सेठी दबो माने आउटर जो रेल टा टिके अधिक रहइबो कंपैरिजन टू इनर रेल अपेक्षा adjoining जोटी दबो coning of wheel ले केते दिया जाय 1 in 20 दिया जाय coning is provided बी तो ठीक अछि in coning wheels are given an outward slope coning of wheels is required on एटा हो भूल inward option c भूल अछि fish balls are made up of fish balls कोथि तयारी हाई कार्बन ना लो कार्बन हाई कार्बन I carbon. हाई कार्बन स्टील
63. Distance between inner faces of the flanges is kept. Flange ର inner portion Yes. କେତେ ରଖାଯାଏ inner face? Beta. Gauge distance option D slightly more than the B gauge. B B Option B. B slightly less. এটা B. Second slightly less. 64. The rail section B. is designated by its Wait for weight Beta. per meter length. 65. What will be the radius of curvature for a transition length a 3.5 degree curve for a high speed BG line? R equal to कौन 7 ଯଦି 30 ନେଇଥିବ in case of the railway କେତେ ନିଆଯାଏ 1750 1750 by D 1750 by 3.5 ହେଉଛି answer. The concrete work for the following part of the building of specified thickness is measured in square meter. କୋଉଟା ହବ B. All of the above. all. 71. Which of the following item is not a lump sum item? Lump sum ମାନେ ମୋଟାମୋଟି Plastering of what? Plastering work. plastering of what is not a ମୋଟାମୋଟି ବାକି ସବୁ ମୋଟାମୋଟି 72. Calculate the total quantity cubic meter of the coarse aggregate required. Coarse aggregate ପଚାରିଛି 1:2:4 ମାନେ ଏଇ ପର୍ସନଟା ପଚାରିଛି 4 ଭାଗଟା କେତେ ପଚାରିଛି ହେଲା 4 ଭାଗଟା କେତେ ପଚାରିଛି Depth of footing ଦେଇଛି concrete use the depth of the footing ଦେଇ ଦେଇଛି 600 mm depth of the footing ଦେଇ ଦେଇଛି 600 mm ଦେଇ ଦେଇଛି 3 meter into 2 meter footing size ଦେଇଛି 3 meter into 2 meter coarse aggregate କେତେ ଆगे first volume କାଟିଦେବ volume କେତେ ହବ volume କେତେ ହଉଛି ଦେଖ ଆगे cross sectional area କେତେ ହଉଛି 3.6 sir volume. 3 into 2 into 3 into 2 into 600 mm ଅଛି 600 by 1000 0.6. आगे वॉल्यूम बाहर कर दो फास्ट स्टेप कंक्रीट करछ माने आगे वॉल्यूम बाहर करियो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 into 2 into 0.6 दैट इज योर 3.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम पाई गलो तो 1:2:4 देछि तो 4 भागटा केते माने 4/7 तो क्वांटिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट केते पचाछि कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी क्यूबिक मीटर ऑफ द कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर एन कौन लिखा है ओला rectangular for a rectangular footing size of 3 into 2 केते क्वांटिटी रो कोर्स एग्रीगेट दरकार से केते पचाछि तो 3.6 क्वांटिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट केते होछि 3.16 sir. 3.16 ऑप्शन बी 73. How many bags of cement are required for 14 cubic meter of cement concrete work that is your 124 गोटे मीटर क्यूब ପାଇଁ केते 6.34 आ 14 मीटर क्यूब ପାଇଁ केते पचाछि हबो हैला गोटे मीटर क्यूब 124 माने एटा स्टैंडर्ड वैल्यू M15 ପାଇଁ गोटे मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क ପାଇଁ हैला 6.34 बैग 6.88 88 ऑप्शन बी नहले ट्रेडिशनली बाहर करिवो 1 2 4 नबो गोटे मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क ପାଇଁ हेले 1.54 हमको दरकार ड्राई मटेरियल सेटो बाहर करिवो 6.34 तापर मल्टीप्लाई करिवो तो एते करियाठू बेटर होउछ डायरेक्टली इजी वैल्यू मन रख दबो गोटे मीटर क्यूब फॉर M15 ପାଇଁ सब बळे पचारिवो 74. A property fetches a net annual income ଦେଇଛି 3000
3000 होची net annual income deducting all outgoings. Calculate the capitalized value of the property if the rate of the interest होची 9% per annum. तो question is asking about capitalized value. केମିତି बाहर कर दिया capitalized value? Capitalized value होची कौन? Net 1000 income into into years 7 purchase. annual income into Net years income purchase. होची 3000 into years purchase होची केते? 100 by 200 by 9. ହେଇଗଲା answer. 33, 30. Option Eight. A sir. 75. A soil has liquid limit 65%, plastic limit 30%, shrinkage limit 25%, and it has natural moisture content होची 45%. Liquidity index केते पचाउछ? Liquidity index ର formula कौन? Natural water content minus plastic limit divided by WL minus WL minus WP. WP. 45 minus 30 by 65 minus 30, 0.42. 0.42. तो ऑप्शन कौन है जो? None of the above. 76. The moisture content in a soil sample is 18.2%. माने तुमको W दे देना. Specific gravity of the soil GS दे देना. What is the void ratio for the sample fully saturated? Fully saturated माने AC equal to 7. S को 1 पकड़ दो. 77. Which of the following bonding is responsible to combine the silica gibbsite seed? এটা হচ্ছে clay mineralogy ର question. Hydrogen bond. Hydrology bond. Like B କଣ series ଥିଲା? का doubt ଅଛି. KTM ମନେ ଅଛି? KTM, ଆଜ୍ଞା. କାଓଲିନାଇଟ୍, ଇଲାଇଟ୍, ମଣ୍ଟ ମୋରିଲୋନାଇଟ୍. କାଓଲିନାଇଟ୍ ହଉଛି ସବୁଠୁ strong hydrogen bond. ଇଲାଇଟ୍ ହଉଛି ionic bond. ମଣ୍ଟ ମୋରିଲୋନାଇଟ୍ ହଉଛି water bond. ତ क्वेश्चन ପଚାରୁଛି କାଓଲିନାଇଟ୍. କାଓଲିନାଇଟ୍ ର ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ର ତାର ଲେନ୍ଥ କେତେ? କାଓଲିନାଇଟ୍ ର ଯୋଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସିଲିକା ଆଉ ଗିବ୍ସାଇଟ୍ ତାର ଲେନ୍ଥ କେତେ? 7. चलो तुम ପାଇଁ କାମ नेक्स्ट डिस्कशन क्लास रे मते कहबो तीनटा बॉन्ड रो कहबो काओलिनाइट इलाइट आ मॉन्ट मोरिलोनाइट गोटे होचे ओपन बुक स्ट्रक्चर तारो लेंथ केते लांगस्ट्रॉम रे रहइबो आ गोटे होचे सैंडविच स्ट्रक्चर दीटा को बाकी दीटा 9 10 9 10 7.2 angstrom 9.6 angstrom 10 angstrom 78. According to Terzaghi and Peck, the ratio of the D15 size of filter material to D85 size of the base material should be केते रहइबा दरकार? Less than 4. D15 of the filter by D85 of the protected metal should be less than 5. 5 not 4. Less than 4. 79. Stress distribution in soil, the approximate method in which the vertical stress at any point to any loaded area is calculated by any area देची. Equivalent. Any area हेले केमिति कैलकुलेशन करिवो? न्यूमार्क्स तो होची फास्ट न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस फैक्टर बाहर करिवो 1 by m into m 1 by m into n. वेस्टरगार्ड आउट होची बॉसिनेक्स. बॉसिनेक्स जो अभी सॉल्यूशन देइचंती सेटा कहा पई थिला होमोजेनियस आ आइसोट्रोपिक पई बॉसिनेक्स जो देइचंती आ वेस्टरगार्ड थिला हमर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम पई किंतु से कहूची एनी एरिया न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट रे फास्ट हम कोन करबा आईएफ रो वैल्यू बाहर करबा चलो जे कोन से गुडे एरिया अछि सेथिरे हम कंसंट्रिक सर्कल लाको पुट करबा देखिबा केते एरिया से कवर करची आईएफ इज इक्वल टू 1 by m into n किंतु सेथिरे सबु एरिया कवर हेई परिबो नाही सेथिरे केवल कंसंट्रिक सर्कल साहाय्य हम देखि परिबा एटा होची न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट तो यार कोड आंसर होबो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड जेति की लोडेड एरिया अछि ताको हम कोन करबा छोटो छोटो एरिया यूनिट्स रे कन्वर्ट करबा आ ईच एरिया यूनिट को हमें कोन करबा कन्वर्ट करबा इक्विवेलेंट पॉइंट रे कन्वर्ट करबा
तापर आम ताको कैलकुलेशन करवा स्ट्रेस ऑप्शन सी 80 undisturbed samples are obtained by undisturbed sample इनवर्ड सैंपलर जेते सैम्पलरटा जेते एजटा शार्प रहइबो सेते आमे कोन कहबा अनडिस्टर्ब सैंपल पाइबा एरिया रेशियो केते रहइबा दरकार फॉर गुड सैम्पलर 20 20 रु अधिका हबा कथा नुहे 81 piston and spring analogy method that was consolidation spring analogy method होची consolidation रे हम साहाଯ୍य रे गोटा सर थिन वॉल थिक वॉल तीन वाला हो बीटा तीन माने कोन पतला माने आमे जो गोटे सपोज एठा होची हमर नॉर्मल जो घरे यूज करती एटा जो कोनते साबुळ बा कोदाळ जहा भी यूज करती तो तार जो एज पर्सन टा पूरा छुरी रो धार भली होई कि नहीं छुरी रो जो धार पर्सन टा जोथि हमें कट करबा सेटा जेते पतला हबो सेते हमें इजीली कटिबो कि नहीं तो से कहूची अनडिस्टर्ब सैंपल हमें केतळे पाइबा अनडिस्टर्ब माने होची सराउंडिंग सॉइल डिस्टर्ब हेबे नहीं तो अनडिस्टर्ब में केतळे जेते हमें भल से ताको कट करि परिबा तो ब्लेड टा जेते शार्प हबो ता माने थिन हेले भलो ना थिक हेले भलो थिक होची मोटा थिन होची पतला तो थिन हेले भलो कि नहीं जेते पतला हबो सेते से इजीली भितर को पेनिट्रेशन करि जिवो जेते मोटा हबो से वाइब्रेशन करि भितर को जिवो 81 तो गला कंसोलिडेशन 82 during the flow over length 30 meter the head loss देछि 5 meter hydraulic gradient केते पचाछ I is equal to h by L IC is equal to del H by L हां change in the head by length I is equal to HL by L 5 by 30 that is your 1 by 6.167 83 the ratio of plasticity index and flow index plasticity toughness index index flow toughness index ratio that is your toughness index 84 plasticity chart gives a relation between plasticity chart हमको कौन शो करे plastic limit and liquidity plasticity chart होची Siri, कोडा जो हमर इक्वेशन ऑफ द ए लाइन थिला मन C हां सर C हबो ए जो ग्राफ टा थिला कोन कोन प्लास्टिसिटी चार्ट एठी थिला गोटे ए लाइन आज्ञा एठी कोन थिला प्लास्टिसिटी इंडेक्स y एक्सिस रे थिला प्लास्टिसिटी आईपी इंडेक्स आईपी और y एक्सिस रे थिला वाटर हां लिक्विड लिक्विड वाटर लिमिट कंटेंट तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट ए दिटा भीतर रिलेशन शो करे प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट से खाली कहूछ y रे की रहबो x रे की रहबो सेटा खाली पचाछ इक्वेशन ऑफ द ए लाइन होची 0.73 होल इनटू wr माइनस 20 ए लाइन ऊपर जदी रहला ताको हम को सॉल्व करबा यू लाइन ए लाइन ऊपर रहले ए लाइन ए यू लाइन ता होची हमर 8% ए लाइन ऊपर रहले ताको को सॉल्व करबा प्ले ना सिल्ट प्ले प्ले ए लाइन ऊपर रहले ताको हम कहबा क्ले ए लाइन तळ रहले ताको हम कहबा सिल्ट बा ऑर्गेनिक पुणी लिक्विड लिमिट जदी तमरो केते केते भीतर रहिला 35 रु कम रहिला ताको हम कहबा लो कंप्रेसिबल 35 रु 50 रहले इंटरमीडिएट मीडियम 50 रु कंप्रेसिबल अधिक रहले 50 हाई हाई कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल 85 the ratio of hydrostatic stress to the volumetric shear modulus of elasticity shear modulus of elasticity hydrostatic stress देछि सर एटा बल्क मॉड्यूलस एटा एक्चुअली कोन होबा कथा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एटा हो जे कहार फॉर्मूला बल्क मॉड्यूलस नॉन ऑफ दिस बल्क मॉड्यूलस फॉर्मूला तो एटा नॉन ऑफ द अबव shear modulus of elasticity हो जे g shear stress by shear strain stress by volumetric strain हो जे k bulk modulus none of the above 86 select the correct statement related to increasing the carbon content in steel from 0.2 to 0.9 carbon content जते बढ़िबो सेते कोन हेबो ना ब्रिटल होबो डक्टिलिटी टा कमी जिवो डक्टिलिटी टा कमी जिवो
तो करेक्ट पचार इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील increases the yield stress and Stress reduces the reduces ductility. the ductility. 87. For the above cantilever beam, the absolute value of the shear force at A रे shear force केते पचार 0 sir. 0 kilonewton. 0. equal to 0 कारण vertical किसी reaction ही नहीं तो vertical reaction में shear force होची is the summation of all the vertical forces either left hand section or right section. 88. Deflection of the free end of a cantilever beam having a concentrated load W at WLQ by midspan. 3 EI. एटा हवा. WLQ by Midspan 3 EI midspan ले पड़ची Oh, sorry, sir. Midspan हाँ midspan sir ले पड़ची सेतिकी कौन हाँ. करिवो WLQ upon 24 EI प्लस करिवो WLQ upon 16 EI midspan ले पड़ची ना The 5/6 सर कैंटिलीवर ଦେଇଛି. एटा cantilever हेलानी कि हमको जो स्टैंडर्ड जिनस हमको जଣା अछि हमको कोन जଣା अछि जदी एंड रे P पड़िथिबो एंड रे केते हाँ आज्ञा. जदी एंड रे पड़िथिबो एको हम कोन करबा सुपर पोजीशन आगे करबा सेंटर रे पड़िछि L/2 L/2 ये केमिति डिफ्लेक्ट करिवो एभଳି डिफ्लेक्ट करिवो तो एठी कोन आसीबो गोटे आसीबो डेल्टा 1 गोटे आसीबो डेल्टा 2 आगे कोन बाहर करबा डेल्टा 1 बाहर करबा डेल्टा 1 कोन हे जिवो W into L/2 रो होल क्यूब WLQ upon 3EI 3 EI. एटा केते हे जिवो WLQ by Q by 24 EI हे जिवो sorry हाँ सर ଏବେ ବୁଝି. हैला चले जानि पहिलो डेल्टा 1 आज्ञा सर. प्लस डेल्टा 2 Plus delta 2 5 5 WLQ by WLQ by 48 EI 48. 89 what is the meaning of biaxial stress biaxial Stress acting uniaxial along माने 2 गोटे डायरेक्शन axis. More than 2. सिग्मा x एपोटे सिग्मा s एटा होची यूनिएक्सियल सिग्मा x सिग्मा y थिले दैट इज योर बाइएक्सियल सिग्मा x सिग्मा y और z थिले ट्राइएक्सियल स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग 2 2 एक्सिस axis ऑप्शन D डी हवा. 90 a rectangular beam of uniform strength and subjected to a bending moment m has a constant width the variation in depth will be proportional to variation in depth z is equal to Width I constant upon हेले y width constant हेले variation of depth is equal to देखो BD क्यूब by 12 आउट होची D होची dx by 2 x मु एथि पय नेली कारण डेप्थ रा चेंज करची B को कांस्टेंट रखली सेठु मु z मु कोन पाइते जाति जो स्ट्रेंथ B into d स्क्वायर by 100 स्ट्रेस होची कोन m upon z z होची केते जो BD स्क्वायर by 6 तो 6m by BD स्क्वायर ताले देखो डेप्थ आउ m सहित कोन रिलेशन dx रो स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ताले dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन हिजो m रो रूट root ओवर of 91 maximum allowable shear stress in a section is 100 kg per centimeter square if bar is subjected to tensile force 5000 kg and if the section is square shaped what will be the dimension of sides of the square दीजिए our max दे दीजिए. tau maximum दे दीजिए 100 kg Is per equal to centimeter square hmm, tau maximum is equal to sigma 1 minus sigma 3 by 2 that is your radius again that is your कौन है radius है वाला ताले वे कौन करियो तो sigma 1 minus sigma 3 by 2 tau maximum होची तमरो 100 tau maximum is equal to कौन हिजो sigma by 2 गोटे स्ट्रेस होची sigma 1 minus sigma 3 by 2 बा sigma by 2 ताले 2 sigma केते हे गला 200
kg per centimeter square. Stress is equal to load per area. area ताले एरिया केते area ହେଇଯିବ P by stress load केते ଅଛି 5000 kg force 5000 by 200 25 centimeter square 25 centimeter square ଆଉ section ଦେଇଛି କଣ square ଦେଇଛି ମାନେ 25 ମାନେ କଣ 5 centimeter into 5 centimeter. centimeter 92 the maximum shear stress 1.5. in a rectangular beam 1.5 times of the average 3/2 or 1.5. ratio 93 of in a thin cylindrical cell the ratio of the longitudinal stress ଗୋଟେ PD by goes 40 ଆଉ to ଗୋଟେ PD by 2T 2T. longitudinal ଟା ହଉଛି PD by PT by 40 40 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି PD by 2T. 2T ହରିଦବ ବା 2T Answer by 2 2T হবে 1 by 2. only none of 0.5 the above. answer ହଉଛି 0.5 94 a beam is supported over 3 rollers lying in the same plane the beam is stable dash ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ beam roller support ଅଛି ତିନିଟା ଯଦି vertical load ପଡିଲା then ଏଟା stable କିନ୍ତୁ ଯଦି inclined load ପଡିଲା କିମ୍ବା horizontal load ପଡିଲା ତ ଏଟା ହଉଛି unstable ଯଦି inclined load ପଡିଲା ତାର ଗୋଟେ component ଆସିବ horizontal component ଯୋଉଟା କି ତାକୁ move କରେଇଦବ for any general loading stable ହବ ନାହିଁ for loading with no component in the direction of the beam ଏଟା ହେଇପାରିବ ମାନେ beam direction ରେ କୌଣସି loading component ନାହିଁ ତ ସେ କେସ୍ ରେ beam କଣ ହେଇପାରିବ stable ହେଇପାରିବ ସେ କହୁଛି stable କୋଉ କେସ୍ ରେ ହବ ଯୋଉଠି beam ର ଏଇ direction ରେ କୌଣସି component ନାହିଁ ଖାଲି vertical component ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା stable condition option B 95 how many cases out of the following are improperly constrained ସେ କହୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ କେସ୍ ରେ how many cases out of the following are improperly constrained ଗୋଟେ ହଉଛି parallel forces concurrent forces perpendicular forces ଆଉ ହଉଛି only moment improperly constrained ଦେଇଛି କୋଉଟା ହବ constant ମାନେ କଣ ମାନେ ଜାବୁଡି ଧରିଛି ଜାବୁଡି କିଏ ଧରିବ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଧରିବ କୋଉଟା ହବ କୁହ Wait. କେତେଟା କେସ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟା ହଉଛି parallel forces ତାପରେ ହଉଛି concurrent forces Perpendicular. perpendicular forces ଆଉ ହଉଛି only moment କୋଉ କେସ୍ ରେ ହବ concurrent forces 2টা ଆଉ ଏଟା ହଉଛି parallel forces ଏଟା ତ ହବନି ତ improperly constrained ତାହେଲେ କୋଉ direction ହବ concurrent forces ଦୁଇଟା degree of kinematic indeterminacy of the given beam କାଇଁ beam ତ ଏଠି ଦେଇନି DK ର value ଯଦି put କରିବ in case of the beam formula କଣ CJ minus RE J ହଉଛି number of the joints RE ହଉଛି external reaction ଯଦି fixed support ଥିବ ତିନିଟା reaction in support ଥିଲେ ଦିଟା reaction roller support ଥିଲେ ଗୋଟେ reaction ତ ଯୋଉ ବି structure ଦେଇଥିବ ଏଠି ତ ଦେଇନି figure ତ ଯୋଉ ବି figure ଦେଇଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଗେ reaction ବାହାର କରିବ ତାପରେ joint ଦେଖିବ CJ minus RE multiply କରିବ apply କରିବ 97 log angles
are used to reduce the length of the connection. log angles हमें कौन पे यूज करते माने ये टाइप स्ट्रक्चर है एटा होचे log angle तो log angle हमें टेंशन मेंबर जोडी गसेट प्लेट कनेक्शन আছে সেটা ଆମେ यूज करते log member हमें कौन पे यूज करबा are used to reduce the length of the connection. 98 the shear capacity of an RCC beam without shear reinforcement कौन होची कौन nominal shear stress होची VU upon BD nominal shear force हेले shear stress सहित multiply कर देबो shear force टा होची तमरो VU कौन हो आंसर without shear reinforcement देछि without shear Tau reinforcement हेले कौन tau C into BD. tau c into bd कारण डिजाइन shear strength जो कंक्रीट विदाउट shear reinforcement होची दैट इज योर tau c सेटा होची डिजाइन shear strength विदाउट shear reinforcement द reinforcement यूज कलो tau b minus tau c 99 for M15 mix concrete according to IS specification local bond stress M15 पाई local bond stress केते 15. केते आसीबो 5 M15 पाई kids. Sir, 10. 10 M15 पाई होची 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बा 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर M20 पाई होची 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो टेबल टा बा 12 Okay. kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो एटा होगा 10 100 minimum spacing between horizontal parallel reinforcement of the same size should not be less than minimum spacing केते रहबा दरकार 2.5 2.5 2.5D. 2.5. 2.5d minimum spacing एटा कोन पिच BD. तो 2.5d सेटा होची पिच three down पिच कोडी आसीबा एटा होची 1800 CD. स्टील एटा होची CD. three da CD. minimum spacing between horizontal parallel reinforcement of same size केते रहबो spacing CD. three or 300 of the same size should not be less than पचार ना कि maximum पचार माने minimum केते रहबो 1D. पचार minimum रहबो 1 diameter 1 diameter. क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट शुड नॉट बी लेस देन व्हाट ताठू आउ कमे परिबानी ताठू पछे बढ़े परिबो ताठू आउ कमे परिबानी तो शुड नॉट बी लेस देन 1 डायमीटर में कमे परिबानी हेलो মানে এনি IS স্ট্রাকচার 456 2000 any structure IS 456 2000 clause number 26.3.2 minimum distance between individual bars the criteria hello complete Sir, 66 question number.